हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं इस वीडियो में डिस्कशन करने जा रहा हूँ क्लास 9 की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7 जो मोशन चैप्टर है। इसमें बेसिकली जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स है जिसको सॉल्व करेंगे। क्योंकि हमने देखा कि जो स्टूडेंट्स होते हैं फिजिक्स में ख़ास करके उनको चैप्टर समझ में आता है, सब पढ़ लेते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। इसलिए हमने ये कोशिश करिए कि जितने भी क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, उन सब के क्वेश्चन मैं अपने इस वीडियो में, इस चैनल के थ्रू मैं आप सबको पढ़ा सकूं और बता सकूं। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ इंटेक्स क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसके अलावा जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है और एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में आ जाएंगे। तो इसको अच्छे से समझने के लिए हमारे पूरे वीडियो को जरूर देखिए बिना स्किप किए। तो सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। ये क्वेश्चन दिया हुआ है पेज नंबर 74 पर, और देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन इज हियर, क्वेश्चन नंबर 2 है ये, बिकॉज वन क्वेश्चन नंबर जो है वो यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि इस पूरे में हम सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ही सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल के अलावा कुछ भी सॉल्व करने वाले नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। द क्वेश्चन इज गिवन हियर, अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड of side 10 meter in 40 seconds. What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds from his initial position? तो एक क्वेश्चन को समझते हैं फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले क्या देगा कि एक फार्मर है जो मूव करता है अलोंग अ स्क्वायर फील्ड। यू नो व्हाट द मीनिंग ऑफ स्क्वायर? स्क्वायर मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल है, और इसका एक साइड दिया हुआ है 10 मीटर। तो सपोज करिए ये एक स्क्वायर है, इनके सारे साइड हैं 10 मीटर 10 मीटर। और जब ये एक एक राउंड कंप्लीट करता है तो द टाइम टेकन इज 40 सेकेंड। इफ वी राइट हियर ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। तो ए से बी, बी से सी, सी से डी, फिर डी से ए तक आने में इसको लगता है 40 सेकेंड का। तो पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 मिनट 20 सेकेंड। यानी कि टाइम, टोटल टाइम कितना दिया हुआ, टी इज इक्वल टू गिवन 20 सॉरी 2 मिनट एंड 20 सेकेंड। तो अगर आप इसको चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, मिनट को जब सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 60। तो ये कुछ हो जाएगा इतना। सो 2 इंटू 60 इज 120 प्लस 20 सेकेंड, so it is equal to 140 सेकेंड। आई होप के समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं, देखें सपोज करते हैं कि वो पर्सन ए से स्टार्ट करता है और एक राउंड पूरा करता है इस स्क्वायर का, इस तरह से। तो इसको टाइम लग जाता है 40 सेकेंड का। फिर ये दोबारा ऐसा मूव करेगा along द सेम पाथ, तो फिर से इसको 40 सेकेंड हो गए। फिर तीसरी बार जा रहा इस तरह से, तो इसके फिर से 40 सेकेंड हो गए। तो टोटल टाइम जो है ये 120 हो गया अगर आप देखेंगे तो। तब इसके पास चूंकि 140 था और 120 इसने स्पेंड कर लिया, तो कितना टाइम बचा, ओनली 20 सेकेंड। सो 20 सेकेंड में कितना ट्रैवल करेगा, इस पूरे का हाफ। तो हाफ कहाँ से होगा, ए से बी एंड बी से सी। सो द फाइनल पोजीशन इज सी। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ए से सी तक का जो डिस्टेंस है, दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट। सो बेसिकली वी हैव टू फाइंड ए सी, और वी कैन से डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ए सी। अब ए सी क्या होगा, बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम वी कैन राइट ए बी प्लस बी, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। बिकॉज इसका फॉर्मूला होता है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसको पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। तो यहाँ से ए सी क्या हो जाएगा, बिकॉज ये स्क्वायर में है तो स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट आ जाएगा। तो दिस विल बी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब अगर देखेंगे तो ए बी की वैल्यू कितनी है, तो ए बी 10 है, तो दिस इज 10 स्क्वायर प्लस बी सी भी 10 है, तो 10 स्क्वायर हो जाएगा।
सो इस तरह से ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर होता है 100 बिकॉज 10 इंटू 10 एंड दिस इज ऑल्सो 100। नेक्स्ट, सो 100 प्लस 100 कितना होगा, तो ये हो जाएगा 200। अब 200 को अगर फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 10 इंटू 10। तो डबल का स्क्वायर रूट क्या आता है 1 हो जाता है, सो ये हो जाएगा 10 बाहर और √2 मीटर। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है आफ्टर 2 मिनट 20 सेकेंड डिस्प्लेसमेंट इज 10√2। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन है पेज नंबर 76। द सेकेंड क्वेश्चन ऑन द पेज नंबर 76 गिवन। पढ़ेंगे, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 minutes. What was the distance of the spaceship from the ground station? The signal travels at a speed of light that is 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। देखिए बेसिकली इसमें दिया क्या, टाइम दिया हुआ है, द टाइम इज गिवन 5 मिनट, राइट, and speed given है, so we have to find the distance. So first you write what is given. So speed given है v is equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second and the time is given 5 मिनट। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ मीटर पर सेकेंड मीन्स टाइम जो दिया हुआ सेकेंड में और ये मिनट में, सो यूनिट ऑलवेज मस्ट बी सेम, दैट्स वाई व्हाट विल डू हियर वी विल कन्वर्ट मिनट इनटू सेकेंड। सो मिनट को सेकेंड में करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना होता है, 60 सेकेंड, सो 5 3 जा 5 6 द 30, सो 300 सेकेंड हो जाएगा। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस, सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड दिया हुआ है 3 इंटू 10 to the power 8 इंटू 300। चलिए, सो सी नाउ 3 इंटू 3, 300 को 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 900 इंटू 10 to the power 8। अब 900 को वी कैन राइट 9 इंटू 100 इंटू 10 to the power 8 मीटर, यू राइट हियर मीटर, 100 मीन्स 10 to the power 2 इंटू 10 to the power 8 मीटर। अब देखिए एक्सपोनेंट का रूल है कि व्हेन द बेसेस आर सेम तो पावर ऐड हो जाएगा, सो 2 + 8 10 हो जाएगा, सो इट्स 9 इंटू 10 to the power 10 मीटर एंड दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज गिवन ऑन पेज नंबर 77। A bus decreases its speed from 80 km/h to 60 km/h in 5 seconds. Find the acceleration of the bus. Here यहाँ पे we have to find the acceleration while the initial velocity u and final velocity v दिया हुआ है और टाइम भी दिया। तो पहले लिख लेंगे what is given. So u means initial velocity that is given 80 km/h। देखिए अगर आप देखेंगे the time is given in 5 seconds, here time is hour, so first we have to convert into meter per second. To do that we have to multiply by 5/18, so it is equal to 80 into 5, if you will multiply you will get 400/18 meter per second and the v is given 60 kilometer per hour, so it is 60, again we have to convert the same 5/18 meter per second, तो ये भी हो जाएगा 300/18 meter per second and the time is given 5 seconds, as you can see here time 5 seconds given. Okay, next, what is the formula of acceleration? A is equal to final velocity means v minus initial velocity divided by time. So the final velocity is given how much, 300/18, so right here 300/18 minus 400/18 and divided by 5. Now
Here the because denominator are same, so this will be 300 minus 400 divided by 18, और ये जो 5 है ये ऊपर आ जाएगा 18 के साथ, हो जाएगा माइनस 100 बाई 18 इंटू 5. अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा 20 टाइम्स. यू कैन डू इट अगेन 10 and this is 9. So next it will be minus 10 by 9 meter per second square. If you will divide it, you will get 1.1 meter second square. This is the answer. I hope you understood very well. Next question is similar question. A train starting from a railway station and moving with uniform acceleration. Attain a speed 40 km per hour in 10 minutes. Find the acceleration. तो याद रखिएगा, whenever the object start from rest, the initial velocity is 0, and whenever the object comes at rest, the final velocity will be 0. So first we will write here what is given in this question. So here the initial velocity, because it is starting from rest, from the station means rest, so this is 0, and the final velocity is given here 40 km per hour. सेम वही करेंगे, इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में. सो 40 इंटू 5/18 मीटर per second. So this will be 200 by 18 meter per second. And the time is given how much? 10 minutes. The time is 10 minutes. 10 minutes को we will convert into second. So this is 10 into 60 second, and it is equal to 600 second. Now we have to find the acceleration. So formula of acceleration A is equal to V minus U by T. Now V is given how much? 200 by 18, as you can see here, minus 0 divided by 600. Again 6 will come here, and because 0 है ना, किसी भी नंबर में से जब 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 ही आएगा. So 200 by 18 into 600. So 0 0 cancel out, and 2 3 just 6. So this will be 1 by 18 3 ja 54. So 54 meter per second square. And when you will divide it, you will get 0.018 meter per second. ये इसका आंसर हो जाता है, पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी, बिकॉज दिस इज एक्सेलरेशन. सो इस तरह से किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं. नाउ पेज नंबर 82 एंड 83 पर ये सारे बहुत सारे, देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस आर गिवन, सो वी विल सी वन बाय वन. A bus starting from rest moves with a uniform acceleration of 0.1 meter per second for 2 minutes. Find the speed acquired and the distance traveled. First we'll write what is given here. First it is starting from rest, so initial velocity is given 0, and it has acceleration this 0.1 meter per second square, and the time is given 2 minutes. Time is equal to 2 minutes. So convert into second. So 2 into 60 second, and again it is equal to 120 second. Now first we have to find the speed acquired, means final velocity. So A, V is equal to what? So for that, because U A T given, we have to find V. तो जो हमारे पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है, उसमें जो फर्स्ट इक्वेशन V is equal to U plus AT will use. So V is equal to U plus AT. This is called the first equation of motion. U 0 है, A is given how much? 0.1 into 120. If you remove the decimal, you have to put here 0 0 0 cancel out. So the V is equal to 12 meter per second. Now second, we have to find the total distance traveled. So S is equal to what? For that we can use the
equation or second equation of motion and third equation of motion as well, because we have all the four quantity and just we have to find the fifth one. So we'll use here the second equation of motion, s is equal to ut plus half at square. So u is 0, so u into time is given 120, you write 120 plus half into, and a is given 0.1 into 120 square, because t is square. So 0 into 120 is 0, and the 1 by 2 is 1 by 2. 0.1 can be written 1 by 10. 120 square means 120 into 120. So here, from here 0 and 0 cancel out. 2 6 ja 12. So now 12 into 6, that is 72. So 720 meter. This is the answer. Question number 2. A train is traveling at a speed of 90 km per hour. Brake applied so that produce a uniform acceleration 0 minus 0.5 meter per second. So find how far the train will go before it brought to rest. रेस्ट में आने से पहले कितना डिस्टेंस, मीन्स यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 लेंगे. तो सोल्यूशन में what is given here, initial velocity is given, u is given 90 kilometer per hour. So convert into meter per second. So 90 into 5 by 18 meter per second. So 90 into 5 is like 18 5 ja 90. So 25 meter per second. V is given here 0, as it brought to rest, and the acceleration is given like you can see 0.5 meter per second square. I think time is not given here, and we have to find the how far means distance. Whenever it is given how far, it is distance, and how long means time. So we'll use the because uva is given, we have to find the s. So that combination only lies in the equation, second equation of motion, which is v square is equal to u square plus 2as. If you will see, second equation, first is v is equal to u plus at, second is s is equal to ut plus half at square, and third is v square is equal to u square plus 2s. And you see here, like what is given here, uva, and we have to find the s. So here it is required time, it also required time, but only this is does not require the time, so we will use this only. Now substitute here, this is 0, u is given how much, u is given, you see here, that is 25, and it is a square, and plus 2 into acceleration is given 0.5, that is minus into s. So it is 0 is equal to 25 square means 625, and because this is minus, so minus plus minus minus, and 2 into 0.5 into s again. So we can substitute, we can transpose this, so it will be minus 225, it is equal to 2 into 5 is 1, so this is minus 1 into s. Now 620 minus 625 is equal to minus 1 into s means minus s, so minus minus cancel out, and hence s is equal to 625. This is the answer. मीटर, यू राइट मीटर हियर. अगर जहाँ भी समझ में ना आए, यू कैन मैसेज मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन. Third one, a trolley while going down an inclined plane has an acceleration 2 centimeter per second square. What will be its velocity 3 seconds after the start? Means it is starting, so it will have 0 initial velocity. So first write what is given. So u is given 0, acceleration is given
2 centimeter per second square. To convert centimeter into meter, we have to divide by 100. So 2 by 100 meter second minus square. And the time is given 3 seconds. Now what is asking? What will be the velocity? Means what will be the final velocity? So u, a and t is given. So this combination, and we have to find the v. So first equation of motion is suitable for this. So v is equal to u plus at. Now v तो find ही करना है. V is equal to what? Okay, u दिया हुआ है 0 plus a is given how much? 2 by 100 and time is 3. So this is meter per second. तो देखिए 0 तो 0 का कोई वैल्यू नहीं है and this will be 50 like. Okay, so we can write v is equal to 3 by 50 मीटर पर सेकेंड. नाउ इसको जब आप डिवाइड करेंगे 3 को 50 से like this, so put here 0 point, so this is 0 again 0, so 6 times, because 5 6 that 30, so it will be like that. So 0.006, so it is equal to 0.06 meter per second. Next, a racing car has a uniform acceleration 4 meter per second square. What distance will it cover in 10 second after start? Okay, स्टार्ट होने के बाद के 10 मिनट के बाद कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? तो देखिए, फर्स्ट इट इज गिवन हियर a is given 4 meter per second square. Next, time is given 10 second, and asking that after start means it is starting from rest, so u is equal to 0. So we have to find the distance as equal to what? We know that the second equation is suitable, so s is equal to ut plus half at square. Ut is given how much? That is 0 into time is given 10 plus 1 by 2 acceleration is given 4 and the time is given 10 का स्क्वायर. देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस 2 इंटू 10 इंटू 10. नाउ वी कैन राइट 0 तो कुछ भी नहीं होता, 2 इंटू 10 20, 20 इंटू 10 200. So this is answer is 200 meter. This is the answer. Now question number 5. A stone is thrown in vertically upward direction with a velocity of 5 meter per second. If the acceleration of the stone during its motion is 10 meter per second in the downward direction, what will be the height attained by the stone and how much time it will take to reach there? What will be the height means distance find करना है and how much time, so time taken find करना. First लिखिए कि क्या दिया हुआ. देखिए, a stone is thrown vertically upward direction with the velocity of 5. तो initial velocity दिया हुआ है u is equal to 5 meter per second. Then if the acceleration, अब ये acceleration किधर है? देखिए, जब कोई ऑब्जेक्ट ऐसा ऊपर जा रहा होता है, when the object moving upward, so acceleration is negative, and when the object moving downward, the acceleration is positive. तो यहाँ पे जो है ना ये अपवर्ड जा रहा था, इसलिए एक्सेलरेशन क्या होगा? नेगेटिव होगा. सो दिस विल बी 10 मीटर पर सेकेंड, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है. Now what will be, so we have to find the height, that is basically distance, and how much time it will take. देखिए यहाँ पे बोलना है कि what will be the height attained by the stone, तो कितना हाइट जाएगा मीन्स मैक्सिमम हाइट बेसिकली ये पूछ रहा. और when it reach at the maximum height, the final velocity becomes 0, right? So v will be 0. Okay, now we'll use this formula.
सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। देखिए यहाँ पे बिकॉज टाइम दिया नहीं है इसलिए हम दो सिर्फ बिकॉज जो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन है उसमें टाइम की जरूरत होती है और टाइम क्वेश्चन में दिया नहीं है, इसलिए हम सेकंड थर्ड यूज करेंगे। तो v तो 0 है, u दिया हुआ है 5 तो 5 का स्क्वायर लिख लीजिए प्लस 2 इंटू -10 एंड s तो हमें फाइंड करना है, s की जगह हम क्या लिख सकते हैं, h लिख सकते हैं, h। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये 0 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। अब ये माइनस एंड प्लस क्या होगा, तो माइनस ही होगा एंड 2 इंटू 10 20 हो जाएगा h। अब हम इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू -25 इज इक्वल टू 20h। तो जो h है वो क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू हो जाएगा -25 डिवाइडेड बाई -20। अब देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 5 एंड 4, तो इट इज इक्वल टू 5/4 मीटर। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आई थिंक ये कितना आएगा, 4 1 जा 4 पॉइंट, 4 2 जा 8 4 5, तो 1.25 मीटर आएगा। ये हो गया। अब पूछ रहा कि हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर, मतलब कितना टाइम लेगा। देखिए टाइम के लिए हम कोई भी दो इक्वेशन है फर्स्ट एंड सेकंड यूज कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या क्या एडवांटेज, बिकॉज v भी मालूम है, a भी मालूम है और u भी मालूम है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन ही लेने वाले हैं। फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब v कितना है 0, u तो मालूम है आपको ये है 5, a कितना है दैट इज -10 और t हमें नहीं मालूम, तो t को हम t लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 5 -10t। अब ये इसको इधर ले आए तो ये हो जाएगा -5 इज इक्वल टू -10t। इसलिए t निकालने के लिए 10 को ट्रांसपोज करना पड़ेगा, तो ये चला है नीचे में -5/-10, माइनस माइनस कैंसिल आउट, ये 2 टाइम्स हो जाएगा दैट इज 1/2। अब ये कितना हो जाएगा सेकेंड एंड इट इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड। इस तरह से हम डिस्टेंस और टाइम दोनों भी फाइंड कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही है, और आगे देखने के लिए जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, और पूरे वीडियो को बिना स्किप किए जरूर देखिएगा। जो भी क्वेश्चंस हो आपके, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम आपके क्वेश्चंस को अगले वीडियो में ज़रूर डिस्कस करें। चलिए, थैंक यू।